Yes. Everyone, are you able to see the PPT? Okay, and have you gone through the PDF which is shared onto your LMS ID? Good. So most of the things you already know, right? What is cloud computing and all, right? There will be a test. I know that you have gone through the pre-test. This pre-test was for entire course module, and there will be a pre-test for each and every chapter. So today I'm not able to conduct that test for the first chapter, but from the next session onwards, there will be a pre-test for each and every chapter. Okay? Okay. So let's start it now. Okay, what is cloud computing? So anyone who wants to explain this? Yeah, please go on, explain. Let's make it as a normal classroom session. Please come near to the mic and speak. The services available on the internet. Yes, any services which is available through the internet can be put as a cloud services. Okay, any other definition, anything else you want to say apart from that? Yes, from the second other study center. From media view, anything else you want to say? What is cloud computing? Or you don't have mic? Okay, okay. You can write in chat box. Okay, so let's continue. So cloud computing, any services which is offered through the internet will be considered as cloud computing, right? Okay. Now here on the slide also you can see that it says like generic term for anything that involves providing hosted services over the internet. The services could be at various levels such as software, it could be a platform, it could be a network, or it could be a infrastructure. So can you give any example for software as service? Anyone who can give me an example of software as service for cloud computing? Amazon.com. Okay, so what kind of service they provide? Amazon.com, okay. Then what service they provide? Cloud storage. Okay, they provide the cloud storage, but we are talking about the software as service. So would you put software in, storage in software or something else? Storage will come into infrastructure or network, okay? Because it's basically a storage is considered as an infrastructure where you can store the things. I'm talking about the software as service. Let's start with the software as service first. Okay, storage we have taken example, and that was for the infrastructure. Anything else you want to say for the software or platform as service? Any example for platform as service? Yeah, you can write into a chat box. Yeah, just let me see. You have written something. Yes. Okay, for software as service, Microsoft Azure is there. Okay. So that is also considered as software as service. So what kind of a service they provide? Do they provide the some softwares, or they are providing something else?
No, they don't provide. So they provide the web hosting and platform. So that will not consider as a software as service, right? So any example for software as service? Windows. For software as service, the Windows, again it is an operating system. So you can put either into the network or infrastructure. Okay. Hmm. So software examples you can take the softwares which are being shared online. Like for example, Google App is one of the example of software as service where they provide kind of a Word, Excel, PowerPoint online. Similarly, the email services all are can be considered for the software as service. Okay, so these are the few examples as a software as service. What about the platform as service? Examples have just taken that, right? Microsoft Azure, and there is Google App Engine, which is going to provide the facility to develop the softwares on Android as well, right? So that you can take platform as service. Okay, on the slides you can see here there are a few things which is describing the cloud computing. The one is it says here as a resource pooling, right? So this is the biggest benefit or biggest feature of cloud computing. Okay, so in this resource pooling, what will happen? You can pull that resource at any point of time. You can use that resource at any point of time. The services can be made available according to the requirements. So that is what a resource pooling is, right? Then second is remote service provisions, right? You may be sitting at any location in the world, but you can subscribe the services from anywhere. So today you may say that India doesn't have this resource or we don't have that resource. How do I study or how do I do that or how do I do these things, right? On a particular things, or we don't have that infrastructure or something like that, right? But if you have the internet connections, you can subscribe the services across the world. So that is what the remote service provision. So you can subscribe the services from any locations from anywhere into the world, right? So that is the one another benefit of the cloud computing or another feature of the cloud computing. The dynamic demand management. Now, what do you feel? What should be a dynamic demand management for cloud computing? No idea. Okay, so dynamic demand management. Yes, other center, second center. Adding 10 clients to servers in 10 to 20 minutes to network, right? Yes, absolutely perfect, right? Within a few minutes you can add the clients, right? So as and when there is a rise in demand, when there is a need of resources, you can adjust according to that. You can make resources online according to the demand. And apart from that, when you don't have that demand or when the contract is over or you don't require the resources anymore, you can switch off. So VMs can be easily switch off. I mean the resources can be easily turn off through the dynamic demand management option. That is what the cloud computing is all about. The fourth feature it says over here, it's distributed networking, right? So anything there you want to put it? What is distributed networking or what kind of service it is talking about?
So in distributed networking, you can subscribe the services, right, from anywhere or any location of the world. In same way, the cloud service provider, yeah, my cloud host computer location can be dynamically changed, right? So that is what the distributed networking. So I may be there at any location, but I can access the resources from any other location as well. So today I am subscribing services from India, and then after that I say that now I am moving to somewhere else into the world, and I want to access the service. So that is, I mean, you don't need to subscribe those services again. So that is what the distributed networking. Apart from that, the service provider, they have their resources distributed across the world. That means it's the same service provider. You may think that, like example we take about the Gmail, right? So you think that every time you access the Gmail, it is from the same server of the Gmail in the world? No, right? So they have the various resources available throughout the world, and with that you can access it. So this is one example of the distributed networking, right? So the load of the services, the load of the resources are balanced or shared across the multiple locations throughout the world. Now let us go through a few examples or features of the cloud computing, right? So 10,000 of parallel hosts which serves millions of users across globes, right? So this is one example of distributed networking. Okay, now about the next thing, next few features of the cloud computing. So the first feature over here is a powerful, right? So we know about the email services, right? We know about the social media sites like Facebook, Twitter, and other websites, right? Anyone who doesn't know about the blogs? Anyone who doesn't understand what is blog? Right? So we know about the blog as well, right? So we know the power of this blog. Okay, so you know about the email facilities and social media sites, right? Okay, we all do, right? The blogs, you can, it's basically a site where you can write the articles, you can share the thoughts, and you can make changes. Even you can make the changes to the previous blogs and can register or can put a new things onto that. You can add changes and you can republish that service. Blog, it can belong to a single individual, or it could be for entire community, right? So if it is, for example, if it is from a single person, then he has a whole right to make changes and to share the thoughts and even allow the comments from the users and readers of that blog. Whereas if it is a community blog, then anyone can publish the articles and share the thoughts or share the knowledge on a particular topic or that way, right? Second feature of cloud computing, it is accessible. It is accessible 24/7, right?
So this is the biggest benefit. Like for example, I have one services at my office. Like let's say that in a particular software, right? Now when I reach home, then I don't have the access to that software. Why I don't have the access to the that software? Because when you leave the company, the resources you also leave at company's premise, right? Whereas if the same service, if the same software, if it is made available through the cloud computing, then you can access it from anywhere into the world, right? Wherever the internet service is there, right? So all the resources are available 24/7. Okay, it is accessible 24/7. Okay, so this is the big benefit of the cloud computing. Of course, for making it accessible, you require internet facility. So that is one of the requirement. Okay, and web browser support. Now, what is the meaning of this web browser support? Now, when you look at the systems, anyone who has worked on Windows as well as Linux platform, both the platform. Anyone who has worked on both the platform, Windows as well as Linux, develop the program. Okay, so you have not used Windows. You have used Windows, but you have not used the another platform, right? Yes, you have. You have worked on. I guess the second center has worked on. I guess in almost all the platforms, maybe Solaris as well as Unix, Linux, and Windows, right? So, can you elaborate the difference between Windows and Unix or Windows and Linux? Who is attending from the second center? Can I know your name, please? Yes, Mr. Harshal. So, can you give the difference between the Windows and Linux? Yeah, Windows is popular because of its GUI, whereas Linux. Okay, so Linux is popular because it is very stable and generally used onto the higher end, right? Okay. So I wanted to ask you one question here. I have a software which is developed on Windows platform. Will it work on Linux as well? If yes, how? If not, then why not? What is the reason? Okay, so because Windows has program written in exe format and understands the binary exes, right? So it executes all the resources in terms of binary plus exe format, whereas Linux has a completely different format, RPM format, right? Okay, so same issue is there with the any software you developed for Linux to Windows or from any OS to any other operating system, right? But the same issue is not there for internet access, right? You open a web browser there in Linux as well, and all the resources are available over there. Also, the Google is same. You don't require any additional features there, right? So this is the biggest benefit of the cloud services because they support the web browsers. They support the internet services. So automatically your software, your
tools or your resource is accessible throughout all the other operating systems, whether it is Windows, Linux, Unix, anything. So the resources are accessible through the web browser. You don't have to have the infrastructure. So if I have a software which is developed in Linux, still it can be accessed through Windows platform. Okay, so this is the biggest benefit of it. Of course, there will be certain changes will require if you want to access with the greater changes, and you want to also permit the users to make changes and all that. But the basic infrastructure will be accessible through the web browser also. That is what it is trying to say here. Yes. So any doubts so far? Anything you want to ask? Yes, please go on. Can you be a little louder, because I'm not able to hear you. So can you do the explanation in local language, English and Hindi? Because some of them are Hindi, they can't understand English. So you want me to explain in Hindi as well? Yeah, that is it. Okay. ओके सो आई स्टार्ट विद तो हिंदी में ठीक है। ये एक्सेसिबल पॉइंट से स्टार्ट करें, ठीक है। सो 24/7 सो जब 24/7 हम बोलते हैं तो दिस मीन्स दैट इसका मतलब ये हो जाता है कि जो रिसोर्सेस है वो थ्रू आउट द डे यू कैन एक्सेस, राइट। हिंदी में पूरी तरह से तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। 24 घंटे के लिए आपको वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है। सो दैट इज उसका बेनिफिट यही है कि कोई भी रिसोर्स हो, अगर आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर, जैसे इंटरनेट आपके पास में 24 घंटे यूज कर सकते हैं, वैसे क्लाउड के द्वारा जो भी सर्विस आप क्लाउड के द्वारा जो भी सर्विस आप दोगे, ठीक है, वो कभी भी आप यूज कर सकते हो थ्रू पूरे दिन में, कभी भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है। बस वही एक रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके ओके। दूसरी बात, यहाँ पे वेब ब्राउजर सपोर्ट लिखा हुआ है। सो वेब ब्राउजर सपोर्ट, तो जिसने अगर आपके पास में फोन, आपको फोन के बारे में तो पता है, एंड्रॉइड फोन आते हैं और विंडोज में नोकिया के फोन जो आते हैं जो विंडोज बेस्ड है, ठीक है, ये दोनों चीजें पता है आपको, ऑल ऑफ यू? यस। सो आपको ये भी पता है कि एंड्रॉइड के जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो विंडोज में नहीं चलेंगे, विंडोज के जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो एंड्रॉइड में नहीं चलेंगे। सही बात है, राइट? तो यही बात अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो विंडोज के लिए है और मुझे उसको यूज करना है लिनक्स के लिए, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट जब, क्योंकि ये क्लाउड सर्विसेज डिजाइन ही इसी तरह से किया जाता है, उसको डिजाइन किया गया हुआ है इंटरनेट के लिए। तो जब उसको इंटरनेट के लिए डिजाइन किया गया हुआ है, तो इंटरनेट कहीं पे भी आ सकता है, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। सही बात है? हाँ। सो जैसे ही आप इंटरनेट एक्सेस करना स्टार्ट करोगे, तो आप कोई भी फिर क्लाउड सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। फिर मतलब क्लाउड सर्विस के लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे एंड्रॉइड वाला ही फोन होना चाहिए, या एंड्रॉइड वाला मशीन होना चाहिए मेरे पास में, या लिनक्स वाला मशीन है तो मैं कुछ चीजें एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, कुछ सर्विस एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ऐसी कोई उसमें कंडीशन नहीं है। तो जिसके पास में भी वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर का ऑप्शन है, वो उस क्लाउड सर्विस को कभी भी एक्सेस कर सकता है।
तो समझ में आ गया ये बातें? ओके, सो लेट्स नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन फीचर, फास्ट रिकवरी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, ऑटोमेशन फीचर के बारे में बात करते हैं। व्हाट यू थिंक, क्या रहेगा इसमें? ऑटोमेशन फीचर में क्या होगा? Yes, second center can answer that. We have a very good center over here. They have all the knowledge. Mr. Harshal, yes, please, sir. You can share it. So, what do you feel? What is there in automated feature? हर्षल, आप कुछ बताना चाहेंगे? Yes, please write in chat box. Yes, yes, I am waiting for you. Yes, automatic site info update in push format, right? So what does it mean? Can you इसको simple terms में समझा सकते हैं? कुछ चीजें, एक आध दो points, examples. Okay, यहाँ पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जीमेल के बारे में, गूगल के बारे में। ठीक है, अगर सोचो कि गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और उसके क्लाइंट्स काफी जगह पर है, या एज न्यू हैपेंस वेबसाइट पुश दिस इन्फो ऑन वेबसाइट एंड थ्रू मेल, यस, राइट? सो एनी न्यू अपडेट्स यू कैन इजीली अपडेट थ्रू द दिस फीचर, ऑटोमेशन फीचर, राइट? सो एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा था। दिस वाज रिगार्डिंग जीमेल। फॉर एग्जाम्पल, जीमेल में कुछ नए फीचर्स उनको ऐड करने हैं कि वहां पे एक टैब देना है जिसके थ्रू आप ट्विटर और व्हाट्सएप भी यूज कर सको। मतलब उसमें आप अपने ट्विटर और व्हाट्सएप का लॉगिन भी आपका उसमें इंटीग्रेट हो जाए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी सोचो कि ये अगर प्राइवेट कंपनी होता और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के लिए यूज होता, एंड ये सोचते हैं कि हम ये प्राइवेट कंपनी अलग अलग जगह पर है, लेट्स से दैट उसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में है, तो जितनी जगह पे उसका बिजनेस है उस जगह पे, हर जगह पे उसको वो सारे फीचर्स को अपग्रेड करना पड़ता था फिजिकली जाके, राइट? मतलब चीजें यहाँ से वहां पे आप सेंड करो एंड उसके बाद में आप वो सब चीजें अपग्रेड करो। जबकि यही फायदा क्लाउड में क्या फायदा हो जाता है कि आप एक जगह पे अपडेट करो एंड उसका फायदा हर जगह पे होगा, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज हो जाता है। आपको सिर्फ एक जगह पर ही आपको उस अपडेट्स को कंप्लीट करना है। वंस यू अपडेट दैट अपडेट्स, एक बार उस अपडेट्स को खत्म हो गया तो इट विल बी अवेलेबल same at each and every location, right? So one more example is shared over here, news gathering site. So ये एक best example है, collects update from other news website. Okay, price gathering site collects update from other websites. So this is the best example of automated features. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि अगर आपने अपडेट्स के लिए लिखा हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज के दिन में पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस क्या है, ठीक है, तो वो मुझे रोज मेल होना चाहिए। सो दिस इज एग्जाम्पल, या दिस इज ऑल्सो नोन एज RSS फीड्स, राइट? सो एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑटोमेशन फीचर में। सो आपने अगर वो सब्सक्राइब किया हुआ है तो जैसे ही उसमें कुछ चेंजेस होता है, अप होता है, डाउन होता है, वो आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, राइट? सो ऑटोमेशन फीचर्स आप एक जगह पे अपडेट करो एंड इट इज अपडेटेड एवरीवेयर, इट इज अपडेटेड एवरीवेयर। द सेकेंड इज फास्ट रिकवरी। एनी सर्विस विच इज डाउन कैन बी इजीली रिकवरेबल, राइट? You don't have to wait for any big upgradation or something, right? So fast recovery means क्योंकि किसी ने आप में से किसी ने वर्चुअल पीसी पे काम किया हुआ है,
वर्चुअल पीसी या VMware के बारे में सुना है, तो आपको ये ऑप्शन समझने में आसानी हो जाएगी. Anyone who has worked or heard about the virtual PC? Okay, so you can also, here the example is given as a fast recovery for load balancing is one of the example. Yes, so virtual PC is one of the example for virtualization, right? Now इसमें होता क्या है? So virtualization में होता क्या है? तो एक मशीन है, फिजिकल मशीन है आपके पास में, ठीक है? उसके ऊपर आप वर्चुअल पीसी इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, या VMware इंस्टॉल कर दीजिए. उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस पीसी के आप कहीं और पीसी बना सकते हैं और कंप्यूटर्स बना सकते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मुझे अपने कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी भी चाहिए, विंडोज 7 भी चाहिए और लिनक्स भी चाहिए, ठीक है, राइट. अगर मैं तीनों एक साथ में अगर इसमें इंस्टॉल करता हूं तो तीनों में से किसी एक में मैं काम कर सकता हूं. तीनों में एक साथ में मैं काम नहीं कर सकता हूं. आज तक जो सिनारियो था उस बेस पे मैं बात कर रहा हूं कि तीनों में एक साथ में मैं काम नहीं कर सकता हूं. या तो मैं लिनक्स स्टार्ट कर सकता हूं जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, या तो मैं एक्सपी स्टार्ट करता हूं, या तो मैं फिर विंडोज 7 स्टार्ट करता हूं. जबकि वर्चुअल पीसी के वजह से क्या हो जाता है, तो यू कैन स्टार्ट एनी रिसोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब लिनक्स भी एक साथ में शुरू कर सकते हैं, एक्सपी भी स्टार्ट कर सकते हैं और विंडोज 7 में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है. और ये सारे मशीन्स वर्चुअल पीसी, नाम ही है वर्चुअल. सो नाम वर्चुअल मतलब क्या हो गया, तो a PC which is not a real, a thing which is not a real. So वो फिजिकल नहीं है, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है. मतलब नेटवर्क में हर चीजें ऐसे ही दिखेगा कि ये सच में है करके, ओके. और वो जब डील करता है तो फिजिकल रिसोर्स के थ्रू ही काम करता है, ओके. अच्छा, दूसरा इसका फायदा क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ, फास्ट रिकवरी के लिए आपने अपना रिज्यूमे बना के रखा था आपके पीसी में, ठीक है. आपको पीसी फॉर्मेट करना पड़ रहा है, सारा डेटा चला जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, उस रिज्यूमे का कॉपी करना चाहिए, ठीक है. आप कॉपी करके या तो पेन ड्राइव में ले लो, सीडी डीवीडी में, या तो कहीं इंटरनेट पे स्टोर कर दो. और जब फॉर्मेट हो जाता है फिर वापस आप वही सीडी या डीवीडी से या पेन ड्राइव से फिर से आप उसको रिस्टोर कर दो, ठीक है. तो जब बात जब तक एक फाइल की है, रिज्यूमे की है, आप वो प्रोसेस कितना फास्ट हो जाता है. बट अभी सोचो कि मुझे मेरे सी ड्राइव का, मेरे डी ड्राइव का, ई ड्राइव का सबका बैकअप लेना है. मुझे मेरा जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वह सारे सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, मुझे फिर से वापस इंस्टॉल नहीं करना है. तो ये सब फायदा वर्चुअल पीसी और VMware में हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो पूरे मशीन को, पूरे पीसी को, पूरे कंप्यूटर को एक सिंगल फाइल में बना के रखता है. अब सोचो कि आपका कंप्यूटर जो है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव सब मिला के एक सिंगल फाइल है. सोचो कि आप तीनों ड्राइव, इस पूरा कंप्यूटर मिला के आपका एक सिंगल फाइल, ठीक है. तो उस फाइल को हैंडल करना कितना आसान हो जाता है. उस एक सिंगल फाइल को, एडमिनिस्ट्रेटर को उसी फाइल को बैकअप लेना है, एडमिनिस्ट्रेटर को उसी फाइल को अगर उसको और मशीन्स चाहिए तो उसी फाइल को कॉपी पेस्ट कर दो और नए मशीन्स बन जाएंगे, ठीक है. सो ये फायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का. सो यू कैन यूज द वर्चुअलाइजेशन फीचर फॉर फास्ट रिकवरी. तो मतलब क्योंकि अगर फेल ओवर होता भी है, अगर कोई फाइल डाउन भी होता है, तो अगर फिजिकल रिसोर्स डाउन नहीं हुआ है, इफ इट इज ओनली अ वर्चुअल पीसी, बिकॉज all the resources are provided through the virtual machines, VMs. तो अगर एक मशीन अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका बैकअप उन्होंने पहले से लेके रखा हुआ है एज अ सिंगल फाइल. और उनको क्या करना पड़ता है, तो पूरे फाइल्स को डिलीट नहीं करना है, उनको फिर से वापस सब चीजें नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती. वो सिर्फ वो फाइल को रिस्टोर कर दो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी रेडी है, सारे प्रोग्राम्स भी उसमें रेडी है, आपका सारा डेटा भी उसमें रेडी है. So that is what the benefit of the fast recovery. So immediate recovery is possible due to the virtualizations or the cloud technology. तो समझ में आया फास्ट रिकवरी का मतलब? okay? So आपके लिए ये एक असाइनमेंट रहेगा. All of you need to when this session is over, you should आप सभी को YouTube पे जाना है,
ठीक है, एंड यू जस्ट टाइप ओवर देयर हाउ टू यूज वर्चुअल पीसी, ठीक है, Microsoft Virtual PC. So it will show you all the list of the videos, and at least go through 1 or 2 videos so that you can have the better understanding how that virtual PC is going to work. ठीक है, I will also give you a demo on virtual PC, how to use it. So this will give you a better idea about how the virtualization affects to the cloud computing. ठीक है, so I will arrange a session on that, a small session. But before that, it is see, ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप थोड़ा कुछ पढ़ के आओ पहले से. तो आपने देखा रहेगा आप जब PDF पढ़ के आए तो this things becomes easy to explain you, right? Okay. The next is scalability. Okay. Now what is the meaning of scalability over here? So scalability मतलब क्या हो गया कि आप जब चाहिए तब उसको बढ़ा सकते हो नंबर्स में. तो जैसे मैंने आपको बता दिया वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन्स के वजह से क्या हो गया कि आप कभी भी रिसोर्स को बढ़ा सकते हो और कभी भी कम कर सकते हो. एक ही मशीन में से आप उसको 100 मशीन्स में डिवाइड कर सकते हो. बड़े बड़े सर्वर्स को आप टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो. एक ब्लेड सर्वर जो होता है वो इट इज इक्विवेलेंट टू 284 सर्वर. अप्रोक्स आप समझ लो कि 300 मशीन के बराबर एक ब्लेड सर्वर आते हैं आजकल. तो एक ही ब्लेड सर्वर में से आप उसको डिवाइड कर सकते हो 300 मशीन्स में. तो ये फायदा है स्केलेबिलिटी का. तो मुझे फिजिकली मेरे पास में एक ही मशीन रन हो रहा है और लेकिन पावर कितना दे रहा है, 300 मशीन्स के जितना पावर दे रहा है. एट ए टाइम में 300 लोगों को उसमें काम करने दे सकता हूँ. तो सोचो कि अगर वो ब्लेड सर्वर मेरे मुझे कॉस्ट कर रहा है yes, clients and virtual machines, it can be a similar, it can be a different, because आप क्लाइंट के बारे में जब सोचते हो तो विंडोज XP, विंडोज 7 यही बात सोचते हो, बराबर है. बट वही अगर मैं ब्लेड सर्वर के बारे में जब बात करता हूँ तो जब मैंने उसको बताया कि आपको कि उसको मैं 300 मशीन्स में डिवाइड कर सकता हूँ, तो सेम टाइम अगर मेरा रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मैं उसको कुछ सर्वर्स में डिवाइड करूंगा. लेट्स से दैट कि मैं उसको 10 सर्वर्स में डिवाइड कर देता हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल मशीन्स क्लाइंट के लिए भी यूज हो सकता है और सर्वर्स के लिए भी यूज हो सकता है. मतलब एक सर्वर में से मल्टीपल, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, मेरे पास में सर्वर जो है उसका पावर ज्यादा है, ठीक है, तो उस छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक सर्वर में 10 सर्वर बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगी. समझ में आया? वही अगर मेरा एंटरप्राइज लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर मैं एक सर्वर को अगर 10 सर्वर में डिवाइड करता हूं तो बाकी की सारी चीजें रह जाएंगी, ठीक है, तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा, राइट. तो कहने का मतलब यही है कि वर्चुअल मशीन जो है वो क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है. तो यू कैन नॉट से दैट कि क्लाइंट इक्वल्स टू वर्चुअल मशीन्स, बट वर्चुअल मशीन could be client as well as server also. ठीक है? Yes. Any more questions? So scalability में ये फायदा है कि आप जब चाहे तभी नया ऐड कर सकते हो, राइट. एग्जाम्पल आप ले सकते हो ईमेल के लिए. ओके, सो ईमेल नंबर ऑफ यूजर्स आप खुद जानते होंगे कि जीमेल के कितने यूजर्स हो गए. अच्छा, एनीवन हु डजंट हैव द ईमेल आईडी ऑन जीमेल, जिसका आईडी जीमेल में ना हो, ऐसा कोई है क्या? हु हैज याहू और रेडिफ मेल बट डजंट हैव एनी आईडी ऑन जीमेल? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आईडी जीमेल पे ना हो? एवरीवन हैज दैट, राइट. कितना स्पेस देता है जीमेल? जीमेल कितना स्पेस देता है? कितना स्टोरेज देता है आपके ईमेल के लिए? जीमेल आपको कितना फ्री स्टोरेज देता है? 15 GB. ओके, यस, 10 GB, 15 GB, ठीक है. हाँ, कोई बताएगा 7 GB भी है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 7, 10, 15 GB. जब जीमेल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे उन्होंने 1 GB से स्टार्ट किया था, ठीक है. आज वो आपको 15 GB दे रहा है, ओके. और जब स्टार्ट हुआ तो उससे ज्यादा आज कितने सारे यूजर्स हो गए उसके. अब फेसबुक ले लो एग्जाम्पल, जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था और आज देखो कितने सारे उसके यूजर्स है.
तो स्केलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि जब चाहे जितने भी चाहे यूजर्स बढ़ा लो आप, ठीक है, फिजिकल रिसोर्स बढ़ा लो, आपको उसके लिए सर्विसेज बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी सुना है क्या फेसबुक में बहुत सारे यूजर्स हो गए, इसके लिए 3 दिन के लिए फेसबुक बंद है, वो लोग पहले कंप्यूटर फिजिकल मशीन से ऐड करेंगे, उसके बाद में फेसबुक स्टार्ट करेंगे, ऐसा कभी सुना है क्या आपने? नहीं। तो ये फायदा है स्केलेबिलिटी का, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ स्केलेबिलिटी. So that is what the cloud computing benefits. The next one is programmable web services and web interface. This is an example given here. Okay, क्योंकि कोई भी सर्विस हो जो आप क्लाउड के द्वारा उसको यूज करना चाहते हो, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो. चेंज कैसे कर सकते हैं? तो प्रोग्राम के थ्रू. ओके, यू राइट अ सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप वेब सर्विसेज का यूज करो एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक चेंजेस. ठीक है. सो ये सारे बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग के. पावरफुल है. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा लाइक ईमेल एंड सोशल मीडिया वेबसाइट, जो मतलब काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है. ओके. दूसरा एक्सेसिबल 24/7, 24 घंटे आप कभी भी उसको यूज करो, कभी भी आप उसको एक्सेस करो. तीसरा इंटेलिजेंट में कभी भी उसका रिकवरी पॉसिबल है. ठीक है. कभी भी आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो रिसोर्स को. और चौथा उसका क्या फायदा है? तो प्रोग्रामेबल. ओके, आप चेंजेस कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस यू कैन मेक द रिसोर्सेस अवेलेबल टू द डिफरेंट यूजर्स. कोई किसी एक यूजर की अलग रिक्वायरमेंट है, किसी दूसरे यूजर्स के लिए, किसी दूसरी कंपनी के लिए आप कुछ और दिखाना चाहते हो, तो ये सब चीजें पॉसिबल है, मतलब प्रोग्रामेबल है. Now about history of cloud. Okay, this is just to give you the few examples, few information. So just go through the slides. Okay, सिर्फ read करना है. Just to give you the examples कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था. तो just go through कर दीजिए आप उसको. कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही दिखेंगे क्या? कल पीपीटी दिखेंगे. Yes, so go through this slide. Okay, so एक एग्जांपल लेते हैं. 1950s में उन्होंने बताया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, अवेलेबल हुए थे, राइट. ओके, तो इसमें कैसे यूज होता था? तो 3 क्लाइंट्स होते थे, टर्मिनल्स होते थे, और उसके थ्रू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एक्सेस होता था. तो इसका कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हो? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं और यूज होते हुए हम लोग ने सभी ने देखा हो, वैसा कोई एग्जांपल? हर्षल, आप दे सकते हो? ओके, यू कैन टेक द. Yes, please go on. So, IBM released an operating system is called VM. What is VM, sir? VM is virtual machine. We just talked about it. Okay, it's a machine which is not a real machine, but still it will work as a real machine. Okay, I will arrange a demo of virtual machine. Now, let's say that next session I will arrange a demo of virtual machine so that you can have a better understanding on that. ठीक है? But before that I want you
to go through this, what is virtual PC and how to use that virtual PC or VMware on YouTube. Okay, so at least 2 या 3 videos को आप go through करो, so this will help you in understanding the next session. ठीक है? Okay. So example आप मेन फ्रेम के लिए ले सकते हो. आपने कभी या यहाँ पे कुछ और है चैटिंग विंडो में. ओके, नथिंग न्यू, राइट. आपने कभी रेलवे जो टिकट बुकिंग जो विंडो होता है वहां पे रुक के देखा हुआ है कि उनका पीसी होता है या नहीं होता है, उनके पास में कंप्यूटर होता है या नहीं होता है? एनीवन हैज सीन दैट? आप सब बोल रहे हो कि होता है. यू ऑल आर फ्रॉम मुंबई, राइट? तो लोकल ट्रेन में तो हर किसी ने ट्रैवल किया है. पास के लिए, टिकट्स के लिए आप जब लाइन में खड़े रहते हो और बाद में जब टिकट निकालते हो या रिजर्वेशन काउंटर के पास में भी आप जाओ तो वहां पे आपको सीपीयू कहीं पे नजर आता है. अभी आप चेक करना, ध्यान से जाना और एक बार चेक करना. उनके पास में सीपीयू नहीं होता है. उनके पास में एक थीन क्लाइंट होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने चैट विंडो में लिखा हुआ है, इट इज नोन एज थीन कंप्यूटर. ओके, ये थीन कंप्यूटर में होता क्या है? इसमें हार्ड डिस्क नहीं होता है. सबसे पहली बात, मतलब वो कुछ भी इंफॉर्मेशन परमानेंट बेसिस पे स्टोर नहीं कर सकता है. ठीक है? सॉरी, okay, in your class you are using that thin client. Yes, sir. Okay, so you know that there is no CPU over there, right? Okay, still you have the connection. आपके पास में कनेक्शन होता है. कीबोर्ड, माउस को ज्वाइन करो, मॉनिटर को ज्वाइन करो, नेटवर्क को ज्वाइन करो. ठीक है? तो ये सारे रिसोर्स कहाँ पे जाते हैं? ये सीधे रिसोर्स, ये थिन क्लाइंट्स किसको कनेक्ट होते हैं? सो ये सब कनेक्ट होते हैं सर्वर को. अभी आपके क्लासरूम में ऑफकोर्स मेन फ्रेम नहीं रखा होगा. रेलवे में जो यूज होते हैं सर्वर्स, क्योंकि रेलवे का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उस हिसाब से वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होता है. जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है यू यूज अ हाई एंड सर्विस लाइक मेन फ्रेम. ठीक है? सो दिस इज वन एग्जांपल फॉर यू हाउ मेन फ्रेम वर्क्स. ठीक है? सेकेंड, यहाँ पे वही मैं यहाँ पे बताया हुआ कि 1970s में आईबीएम ने ये वर्चुअल मशीन रिलीज किया था. वीएम का कॉन्सेप्ट रिलीज किया था एंड वहां से ये स्टार्ट हुआ था. जबकि वर्चुअल पीसी और VMware जो है वो 2001-2002 के बाद में इतने पॉपुलर हुए. तब तक ये इतने पॉपुलर नहीं थे, बट उसका इन्वेंशन आप देख सकते हो कि आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हो चुका था. ठीक है? यस, कुछ और चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगा क्लाउड को समझने में. सो प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड एंड देन वी कैन डिस्कस. चलेगा. आई जस्ट डिस्कस दिस हिस्ट्री एंड और शुड आई just speak to them. They are okay with them to continue, but since they have been since 2 o'clock, they will just be sitting over. They just pass with them. चलेगा. Okay, so some more examples are given, like 2006 Google launched the Google Docs. Okay, so you can search on internet like what is a Google Docs. Everyone has used Word, Excel and PowerPoint. सही बात है? So Google Docs भी कुछ इसी तरह से है. इसका फायदा ये हो जाता है कि आप जो Word, Excel और PowerPoint जो भी सॉफ्टवेयर है वो ईमेल आईडी के साथ में, मतलब गूगल के आईडी के साथ में मूव होता है. तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके वो सब गूगल ड्राइव पे स्टोर हो जाते हैं. तो आपको कुछ भी साथ में रखने की जरूरत नहीं.
तो जहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्शन है वो डॉक्यूमेंट्स आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी अपडेट्स कर सकते हो, किसी भी ईमेल आईडी के साथ में शेयर कर सकते हो। जब ईमेल आईडी के साथ में शेयर किया हुआ है तो वो कब कहीं से भी वो एक्सेस करके उसको चेंजेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आज की अटेंडेंस, ठीक है, अभी मुझे ये चाहिए कि आज किसने अटेंड किया है और किसने नहीं किया हुआ है। तो यहाँ तो एक तरीका ये होता है कि मैं आपको एक वर्कशीट बना के भेजूं जिसमें सारे नाम हो स्टूडेंट्स के और आप मुझे वहां से आंसर दो कि कौन प्रेजेंट था और कौन एब्सेंट था वापस ईमेल में। या तो हम दोनों क्या कर सकते हैं कि गूगल लॉन्च में अपना अपना आईडी है, लॉग इन कर देने का, वहां पे एक सिंगल शीट रहेगा, वहां पे आप पूरा अपडेट कर दो चेंजेस। आपने जो अपडेट किया हुआ है उसको बस उस ईमेल आईडी के थ्रू आप शेयर कर दो तो वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो आई डोंट नीड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल फ्रॉम यू। तो मतलब वो गूगल डॉक्स इस तरह से काम करता है, लिंक्स के थ्रू काम करता है और जो फाइल्स रहते हैं वो गूगल ड्राइव में शेयर हो जाते हैं। ठीक है, एनीवे अच्छा मुझे एक और पूछना था कि यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सेशन और यू वांट अ ब्रेक और यू वांट टू स्टॉप दिस सेशन एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, क्या करना है? बिकॉज देयर वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर सेंटर्स, तो वहां पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को स्टॉप करना पड़ा हुआ है। So because you people have come by 2 o'clock somewhere, so if you want me to continue the session, I can go on, or if you want me to stop and continue next week, so according to that we can plan. So you continue Next week. next week. Stop it right now. Okay, okay. So no issues, we can stop that. Majority wins. You're going to continue the session. You want to continue this session, right? No. You stop We're going to be continuing the next session. Okay, you want to continue in the next session. ठीक है, चलेगा। तो हम next session में continue करेंगे। But before that, please go through what is virtual PC, how to use that virtual PC on YouTube. Okay, you also need to appear for a chapter test, which I told you, and we will be uploading on LMS ID, and we will inform you when it is updated. But before next session, you need to go through that test as well. Okay, the test will be onto the first chapter, as I told you. ठीक है? So आज के लिए यहीं तक, इंतजार करो अगले सेशन तक। See you, टाटा, बाय बाय। Thank you, sir. Sir, Yeah. Yes, please. to submit the chapter assignment. Assignments I will share you on each chapter. On completion of each chapter, I will give you the assignment on each chapter. Okay. And when they have to submit it, sir? Before starting of the next chapter, because each chapter has a assignment. Okay. And sir, on which day the next session will be held? Next week, either it will be on Thursday or Friday, because you have the maximum number of students. So you tell me, is it okay on Thursday or you want it on Friday? Because you can talk to Mr. Moise. So depends on the center. Yeah. Better to talk to with this. Thank you, sir. Okay, so I'm ending this. Okay, see you. Bye.